In market research topic, we have moved to another concept today that is called sampling. The situation is when it's not possible from ask all population, all users of a product or potential users of a product about a product or service. So what we do, we ask a few people out of them and we apply that to all. That is called sampling basically. And it's never possible that we ask all the people about something, about an information we want to collect information. So we do sampling. Sampling is a process of selecting a group of respondents. The process of selecting a group of respondents from a larger population and let's define sample 2 here और फिर we'll continue. और sample फिर किसे कहेंगे? A group of people taking part in a market research a group of people taking part in market research surveys selected to be representative of overall target market. तो ये जो है दिस इज व्हाट वी कॉल सैंपल. मैंने कहा कि जब हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम सारी पॉपुलेशन से पूछें तो वी आस्क अ फ्यू पीपल आउट ऑफ देम एंड अप्लाई टू ऑल. अच्छा जी, क्या जरूरत है हमें सैंपलिंग क्यों करनी पड़ती है? वैसे तो मैंने 2-3 दफा बात करी लेकिन हम इसको लिख भी लेते हैं. नीड ऑफ सैंपलिंग क्या है? In almost all situations, Ibrahim, it's impossible to seek evidence from the total population. We cannot. If there are 2 million participants in a population, how can we collect 2 million questionnaires from those? It's not possible. So the total large population, the total market is always a larger one. It's not possible to collect information from all of those. So what we do, we select a few people because we want to save time, we want to save money, and it's potentially impossible to ask all the people. So we select a few people out of those. The few people are called sample. There are different methods of sampling that we use. First of all is called simple random sampling. What is simple random sampling? It's very simple. Sample is chosen randomly from the available population. Sample is chosen randomly from available population. It means that every participant has equal chance of being included in research process. What we do in a simple random sampling, we need a few information. For example, information needed for
simple random sampling. First of all, a list of all the population in the target population, a list of all people in target population. Two, a sequential number given to each member. A sequential number given to each member, and then a list of random numbers generated by computer. This is what we call simple random sampling, because computer is generating randomly now that whatever participant is there, and we can whatever the number computer generates. For example, computer says ask seventh, and we list already number already has been given to that people, and we will ask the seventh person now. Then we have systematic sampling. The second way of sampling, systematic sampling. In this method, the sample is selected by taking every nth item. The definition is a little weird, but it's so. The sample is selected by taking every nth item from the target population. By taking every nth item from the target population. What we do until the desired sample size is reached. Until the desired sample size is achieved. For example, what we do, suppose a supermarket wants to study the buying habits of the customer. So what they do, the sample could be chosen by asking every 10th customer entering into the supermarket until they achieve the target sample of 200 people, for example. So if 2000 people enter into the population, they ask every 10th person, their target population, their target sample size would be achieved. Again, the researcher must ensure that every chosen sample does not hide a regular pattern, and a random starting point must be selected, for example, 7th, for example, 8th, and something like that. So this is the way we do systematic sampling. Sometime we can use the nth number. We can use the formula to calculate the nth number. That is population divided by required sample size. If we want to collect from out of the 2000 population, we want to collect 200 samples. So we should ask every 10th person, for example. This is the way nth number is selected. The next sampling method we have is stratified sampling. Stratified sampling क्या होती है? Let's define stratified sampling first, and then we'll go into the details of that. Stratified sampling draws a sample from specific subgroups. Draws the sample from a specific subgroup.
or a segment of the population and uses random sampling to select an appropriate number from each stratum. ये तो हुई डेफिनेशन कि हमने पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड किया और फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें हर ग्रुप से इंफॉर्मेशन लेनी है और हमने हर ग्रुप से रैंडमली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली. This is how we define stratified sampling. But going into the detail of this, ये method recognize करता है कि target population is made of many different groups that may have different opinions about the product. For example, if we're talking about a shampoo, so we might recognize that there are male and female parts of the population. There are younger and older people part of the population. They might have different opinions about that shampoo, for example. तो ये जो ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट यूजर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट हैं दे आर कॉल्ड स्ट्रेटा और इन्हें लेयर्स ऑफ पॉपुलेशन भी कहते हैं. द ग्रुप्स आर कॉल्ड स्ट्रेटा और इन्हें हम लेयर्स ऑफ पॉपुलेशन भी बोलते हैं. ओके तो हम क्या करते हैं हम इन ग्रुप्स में पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं. तो अब ये कि इट शुड कंटेन नंबर ऑफ ऑल ऑफ दीज स्ट्रेटा, जितने हमारे जो ग्रुप्स हैं उन सब में से नंबर लेना होता है. इस वजह से हम इसे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं. हम इसके एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने पता करना है कि फ्रॉम द 100 फेलो स्टूडेंट्स इन योर स्कूल अबाउट अ सॉफ्ट ड्रिंक प्रेफरेंसेस इन स्कूल शॉप. So it would be more accurate if instead of asking 100%, you split the school into certain strata such as class, groups, age, gender. So if the whole school contains 1,000 students from whom 50 are girls in year 8 and accurate sample 100 would be contain 5 girls from year 8. How come? कि हमने क्या किया 50 over 1000 किया population से तो 8% आ गया ना हमारे पास क्योंकि 50 थी year 8 में. तो ये हमने इसका मतलब है कि 8 जो सैंपल हैं वो किससे कलेक्ट करने हैं. सॉरी इसका आंसर 50 और 5 आ गया सॉरी. तो हमने जो है 5 जो सैंपल हैं वो किससे कलेक्ट करने हैं वो हमने ईयर 8 से कलेक्ट करने हैं क्योंकि ईयर 8 में 50 स्टूडेंट्स हैं और टोटल जो है हमारी पॉपुलेशन वो 1000 लोगों की है. तो हमने डिवाइड करके कि इस स्ट्रेटा से ये वाली रिप्रेजेंटेशन हमने लेनी है 5 लोगों की रिप्रेजेंटेशन हमने लेनी है. अब इसी तरह सब ग्रुप से हम इस पॉपुलेशन को कर लेंगे. मिसाल के तौर पे हम ये समझते हैं कि ग्रेड 9 में फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे 100 तो आंसर इज 10. तो इसका मतलब है कि ईयर 9 से हम जो है वो 10 स्टूडेंट से पूछ लेंगे. तो इस तरह हम अपना सैंपल जो है वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की बेस पे बना लेंगे. उसके बाद नेक्स्ट सैम्पलिंग टेक्निक इज कोटा सैम्पलिंग. Quota sampling is similar to the stratified sampling. By this method, interviews select इसी तरह number of the groups and all that. लेकिन differences क्या हैं पहले हम इसकी definition देख लेते हैं और फिर उसके differences पे जाएंगे. When the population has been stratified, यानी groups में divide कर दिया. When the population has been stratified and the interviewer takes an appropriate number of respondents from each stratum.
तो ये हुई कोटा सैम्पलिंग। अब मैंने कहा कि दिस इज सिमिलर टू द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें इंटरव्यूअर सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ द सर्टेन कंज्यूमर ग्रुप्स मेड अप द होल टारगेट पॉपुलेशन। अगर हम जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन में 65% फीमेल्स हैं, 35% मेल्स हैं, 35% ग्रुप्स हैं एज बिटवीन 14 to 20, 35% कुछ और हैं, तो हम क्या करेंगे, द सैंपल शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंगली। हम देखेंगे कि हमने 200 लोगों का सैंपल इकट्ठा करना है, तो फिर हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे, और वो अगर हमने 20% हमारे एज ग्रुप 30 to 40 में फॉल करते हैं, तो उनका 20% फाइंड आउट करेंगे साल के तौर पे, कि अगर हमने 200 का सैंपल साइज लेना है, और हम ये जानते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें 20% लोग हैं वो 31 से लेके 40 की एज में फॉल करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 200 का जो 20% है वो 31 से 40 की एज ग्रुप से ही कलेक्ट करेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल कोटा सैम्पलिंग। एंड देन फाइनली वी हैव अनदर सैम्पलिंग टेक्निक दैट इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग। को भी डिफाइन कर लेते हैं पहले। Using one or a number of specific groups, number of specific groups to draw sample from and not selecting from the whole population. इसको हम सैम्पलिंग विद इन सैम्पलिंग भी कह सकते हैं। For example, we use a town or a region. इसमें हम क्लस्टर सैम्पलिंग में करते क्या है, जब when a full sampling frame list is not available to the target population or too geographically dispersed or diversified, कोई एक सैंपल, कोई एक पॉपुलेशन का पार्ट कैलिफोर्निया में है, दूसरा सऊदी अरब में है, तीसरा पाकिस्तान में है, तो फिर क्लस्टर सैम्पलिंग क्या करती है, ओनली यूज अ फ्यू ग्रुप्स, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पाकिस्तानी पीपल और सऊदी अरेबिया पीपल एंड अप्लाई इट टू ऑल। तो दिस विल बी कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग इन दैट सिचुएशन। अब द क्वेश्चन इज, ये जो सारी हमने सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़ी, इनके लिमिटेशंस क्या हैं, कौन से वाले प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं जब हम सैंपल को यूज करते हैं इन देयर रिसर्च मेथडोलॉजी। limitations of using sampling। सबसे पहले तो रिलायबिलिटी ऑफ द सैंपल साइज, सैंपल मेथड, कि हमने सही वाला सैंपल मेथड यूज किया या नहीं, क्योंकि अगर मेथड ही गलत होगा तो रिसर्च इंफॉर्मेशन कलेक्टेड भी गलत हो जाएगी। फिर सैंपल साइज के, कितनी बड़ी पॉपुलेशन थी उसमें से कितना बड़ा साइज लिया, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन से छोटा सैंपल साइज विल नॉट रिप्रेजेंट एनी डेटा। फिर सैम्पलिंग में गो बायस्ड, ये इससे क्या मुराद है, इस चैप्टर के आखिर में हम बायसनेस ऑफ सैम्पलिंग के बारे में पढ़ रहे होंगे। फिर सम टाइम हमने रैंडम सैम्पलिंग कर ली, तो होमोजेनियस ग्रुप्स हमारे पास आ जाएंगे, कोई जिनकी इंफॉर्मेशन एक ही तरह की होगी और शायद वो कोई अच्छा रिजल्ट ना दे सकें। फिर गेटिंग लार्जर अगर सैंपल की कोशिश करेंगे तो दैट इज टू एक्सपेंसिव।
If we use quota sampling, तो may not be statistically representative, जो सबको हमें use करना चाहिए. These are the sample techniques and the limitations of different sampling methods.